friends and my dear students, welcome back to my channel. Today we are going to do the topic galvanometer. Last class I had taught you galvanometer, and today we are going to see how this galvanometer can be used to measure voltage and measure current. Voltage measuring device is voltmeter. This is a traditional method of measuring voltage with the help of galvanometer. अभी तो हमारे पास काफ़ी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स आ चुके हैं. So it's a basic concept. So we say moving coil galvanometer as voltmeter. So moving coil galvanometer को voltmeter की जैसे आप कैसे यूज़ कर सकते हो. So moving coil galvanometer को voltmeter के जैसे यूज़ करने के लिए हमें एक high resistance कनेक्ट करना होगा उसके सीरीज में. So we say high resistance is connected in series with moving coil galvanometer. So there is a moving coil galvanometer और उस moving coil galvanometer को हम high value of resistance series में connect कर रहे हैं. So say this is a moving coil galvanometer. Resistance of this galvanometer is capital G, and to moving coil galvanometer we are connecting an unknown resistance X in series. Say X is the resistance of this unknown resistor connected in series. Now for series combination, the overall potential I am taking as V. In series combination, if I consider Ig is the current flowing through the galvanometer, then series combination में current constant रहेगा और potential distribute हो जाएगा. So we say current is constant in series combination. Current is constant in series combination, तो X के थ्रू फ्लो होने वाला करंट भी Ig करंट होगा और वही करंट बाहर आ जाएगा. So if I say this is terminal A and this is B, A और B के बीच में complete कंडक्टर के बीच में करंट Ig रहेगा. So current is constant in series combination. So what about voltage? So voltage, it gets distributed in series combination. So a voltage across G will be different and voltage across X will be different. So say Vg is voltage across the galvanometer G, and say Vx is some voltage across this resistance, high resistance in series with galvanometer. Then total potential, so by Kirchhoff's potential law or by Kirchhoff's voltage law, we say total potential is nothing but Vg plus Vx. Potential across galvanometer according to Ohm's law, Igg. Ig is the current through the galvanometer, G is the resistance of galvanometer. Potential across resistance X, we say Igx. Ig is the current through this resistor X, and X is the value of resistance of the resistor X, because we have connected a high resistance in series. So thus this galvanometer behaves as voltmeter, and V is the total potential. Now if I consider V in terms of Igg and Igx, in terms of Igg and Igx, we need to calculate X, means how much amount of X is to be associated here. So take Ig on the other side, we get Igx is equal to, I'll do it here itself, Igx is equal to V minus Igg. Take Ig down, I'll get the value of X. X is equal to V by Ig, V minus Igg by Ig. Distribute this Ig to both the terms. So X comes to be V by Ig minus Igg by Ig. Ig will get cancelled. X is V by Ig minus G. So this much amount of X or the resistance should be connected in series to this galvanometer. So this galvanometer can behave as a voltmeter. Now I am putting a condition. What condition I am putting? We say if N is the factor by which voltage is to be increased, because ये voltmeter है,
सो इसे n फैक्टर से आप वोल्टेज इस वोल्टमीटर का इंक्रीज कर रहे हो. सो n इज सम फैक्टर बाय विच voltage is to be increased. Voltage of moving coil galvanometer is increased. Okay, so what will be my new voltage? So if Vg is the voltage of galvanometer and V is the new voltage, so Vg, potential difference of galvanometer, and V is the new potential, then V is n times Vg. Then V is n times Vg. Then how much should be this x? N times means n can be any scalar, say 2 times, 3 times, 25 times, 100 times, 500 times. Any scalar or any factor n can be taken. Then how much will be x? So we say then x is V by Ig, that is n Vg by Ig minus g. Then x is nothing but n Vg by Ig minus g. But what is Vg? Vg is Igg. So n times Igg according to Ohm's law, V is equal to IR, Vg is Igg minus g by Ig. Ig cancel, we say g is coming common outside, n minus 1. So if you know the factor by which you want to increase the voltage of the galvanometer, अगर आपको पता है कि आपको वोल्टेज को डबल करना है, ट्रिपल करना है, 500 टाइम्स करना है, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला से भी शंट का वैल्यू फाइंड कर सकते हो. Similarly, if you don't know how much it is to be increased, then you can directly use this as the base formula. Vig का वैल्यू आपको पता है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस पता है, इससे आप x फाइंड कर सकते हो. अब नेक्स्ट देखेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर कैसे बना. चलिए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को एमीटर कैसे बना सकते हैं वो देखते हैं. सो नाउ हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को बना रहे हैं एमीटर. मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एज एमीटर. एमीटर क्या होता है? तो एमीटर इज द करंट मेजरिंग डिवाइस. और जैसे कि मैंने आपको कहा अभी तो डिजिटल एमीटर्स आ गए हैं. सो दिस इज जस्ट अ मेथड जो ट्रेडिशनली यूज़ किया जा सकता था. सो इसको कैसे बनाते हैं एमीटर? तो यहाँ पे हम एक लो रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे पैरेलल में. सो लो रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. सो एक लो रेजिस्टेंस को मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप कनेक्ट कर दीजिए. उससे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एमीटर जैसे बिहेव करेगा. सो कंसिडर करेंगे ये एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है और इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को एक लो रेजिस्टेंस हम कनेक्ट कर रहे हैं से S. ना कई बार ये जो वर्ड है S, इसे एज अ रजिस्टर क्यों यूज किया गया? सो इसका मतलब होता है शंट. शंट इज एनी डिवाइस, कोई भी एक ऐसी डिवाइस जो करंट को लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड कर दे, उसे शंट कहते हैं. से दिस इज पॉइंट P, से दिस इज पॉइंट Q. कंसीडर करो I इज द करंट एंटरिंग एट पॉइंट P. इफ I इज द करंट एंटरिंग एट पॉइंट P, सो करंट दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. वन विल बी द करंट गोइंग टू गैल्वेनोमीटर से IG करंट, and some amount of current will go through the shunt resistance say IS current. So IS is the current going through the shunt resistance और फिर Q पे दोबारा से ये दोनों ऐड होके बन जाएंगे I current. So basically P और Q जंक्शन पे हम क्या लगा रहे हैं? Kirchhoff's current law. So say by Kirchhoff's current law at junction P, जंक्शन P पे हमने अप्लाई करना है किर्चॉफ्स करंट लॉ. किर्चॉफ्स करंट लॉ के अकॉर्डिंग टोटल अमाउंट ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ करंट कमिंग आउट ऑफ द जंक्शन. सो I इज इक्वल टू IG प्लस IS. टोटल करंट इज इक्वल टू IG प्लस IS. देन हाउ मच विल बी द करंट IS? द करंट IS विल बी I माइनस IG. Okay, what is this combination? This is parallel combination. So, in parallel combination, current is getting distributed, potential difference remains constant.
So we say voltage or potential difference is constant in parallel combination. So parallel combination याद रखिए, potential difference is constant and series combination में हमने point note किया था that current remains constant. So because potential difference is constant, potential across V across G that is Vg and potential across S that is Vs दोनों same होंगे. So potential difference of moving coil galvanometer is same as potential difference of low resistance S. So Vg is same as Vs. According to Ohm's law, V is equal to IR, Vg will be IgG, Vs will be ISS, S के across current IS, G के across current IG, IgG is equal to ISS. What is IS? IS is I minus Ig. So IgG is equal to I minus Ig times S. Now take this I minus Ig term down. So what will S become? S will become Ig by I minus Ig times G. So this is the amount of shunt resistance. इतना शंट रेजिस्टेंस आपको गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट करना होगा to get galvanometer as a ammeter. Now I can also change the range of current. So if I say n is some factor, जैसे कि हमने वोल्टमीटर के लिए कंसिडर किया, say n is some factor by which the range of galvanometer is to be increased. So factor by which current range of moving coil galvanometer is increased. So that means what? I am taking the current obtained is some n factor times the current of the galvanometer. That is I is n times Ig. So if I is n times Ig, how much will be the shunt? So जैसे कि हमने वोल्टमीटर में किया था कि वोल्टेज मीटर 10 टाइम्स 5 टाइम्स 100 टाइम्स 500 टाइम्स, उसी तरह से एमीटर का रेंज अगर आपको 10 टाइम्स 5 टाइम्स 500 टाइम्स n टाइम्स करंट के टर्म्स में इंक्रीज करना है तो हम I इज इक्वल टू n टाइम्स Ig ले लेंगे. I की जगह पे n टाइम्स Ig डालेंगे, S मिल जाएगा. सो S इज इक्वल टू Ig बाई n टाइम्स Ig माइनस Ig. Ig common outside, Ig cancel. I get G upon n minus 1. So shunt is G upon n minus 1. So this is the value of shunt if n is the amount or the factor to be increased. Now the next we are going to determine the term how much fraction of current is getting shunted in terms of total current. So let's obtain fraction of total current through shunt resistance. So we'll apply the same logic again. I'm obtaining fraction of total current through shunt resistance. ओके तो शंट के थ्रू टोटल करंट में से कितना फ्रैक्शन ऑफ करंट पास होगा. अभी हमने देखा S is G by n minus 1 and S is nothing but Ig by I minus Ig into G. Applying the same logic, potential across shunt resistance is same as potential across galvanometer. Potential across shunt resistance कितना होता है? So ISS. Potential across galvanometer कितना होता है? IgG. By Kirchhoff's current law हमने क्या obtain किया था? I is nothing but IS plus Ig. Okay. Then how much will be IS? IS will be I minus Ig. How much will be Ig? Ig will be I minus IS. So पिछले वाले डेरिवेशन में ये वाला टर्म यूज किया था. इस डेरिवेशन में आई एम गोइंग टू पुट Ig as I minus IS. So ISS is equal to I minus IS times G. मुझे चाहिए IS और I का रेशियो.
IS is the current in shunt and I is the total current. So हम इसे इक्वेशन को IS और I में रखेंगे, IG को I माइनस IS सब्सटीट्यूट कर देंगे, IgG और IG माइनस ISG, G को ब्रैकेट के अंदर लेके जाइए, वी गेट इट एज ISS, IS साथ में लेके आना है, ISS प्लस ISG is equal to IG, capital G, okay, then IS common outside, S plus G is equal to IG, okay. I want ratio of IS by I, so IS by I ratio comes to be G by S plus G, okay. This is the fraction of shunt current in terms of total current, okay. So here we are going to end the topic of moving coil galvanometer. So moving coil galvanometer topic हमने cover किया. moving coil galvanometer को आप voltmeter कैसे बनाओगे, moving coil galvanometer का आप ammeter कैसे बनाओगे. Thank you for being with us till the end. If you like the video, please do share and subscribe my channel. Also click the notification or the bell icon so that you'll be notified of the new upcoming videos. Thank you so much.